हेलो दोस्तों, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं आर्ट वाले। जैसे कि आपको पता ही है, स्केचिंग सीरीज़ चल रही है और जिसे भी स्केचिंग में इंटरेस्ट है वो ये स्केचिंग की सीरीज़ फॉलो कर सकता है और अच्छी अच्छी रियलिस्टिक चीज़ें सीख सकता है। अगर आपको रियलिस्टिक चीज़ें बनाना पसंद है तो आप सही जगह पे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरीके के टूल्स हम यूज़ करेंगे एक सिंपल सा ग्लास बनाने के लिए। अगर आप ग्लास बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए होगा, सेम पेंसिल, आपका इरेजर और मेकअप ब्रश। यही बेसिक 3 टूल्स है। अगर अल्टरनेटिव कुछ और भी चाहिए आपको, अगर इसके डिफरेंट वर्जन्स है, मैकेनिकल पेंसिल, डिफरेंट काइंड ऑफ इरेजर, सब ओके है, नो रिस्ट्रिक्शंस। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं करती, बट जितने टूल्स यूज़ करती हूँ उसमें मैं रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लोग जितने देखते हैं उनके पास, जिनके पास कम भी मटेरियल है वो भी ताकि बना पाए, ये मेरा मोटिव होता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लास ऑब्जेक्ट को बनाने की। तो ग्लास ऑब्जेक्ट में हमको क्या ऑब्जर्व करना होता है, फर्स्टली हमको ये देखना होगा कि वहाँ लाइट रिफ्लेक्शन कैसी आ रही है। जहाँ लाइट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ हम वाइट एरिया छोड़ेंगे, राइट। और जहाँ हमें डार्क दिखाना है, जैसे बेस पॉइंट होता है, बेस होता है ना, ग्लास अगर रखी हुई है उसका बेस पॉइंट है तो उसको हम डार्क बनाएंगे। और जहाँ पर डार्क ये बेस का रिफ्लेक्शन पड़ेगा अपर पोर्शन पे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि वो जो मिडल का 3D पोर्शन है, जैसे लोग इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, बट मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगी कि कैसे मैं अच्छे से बनाती हूँ उसको। एक वाटर को, सेंटर का वाटर को हम 3D इफेक्ट कैसे दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि 3D इफेक्ट कितना अच्छा होता है, कैसे हम दे सकते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो डरिए मत, बिल्कुल मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगी कि कितने अच्छे से वो बनता है ना। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बहुत बिगिनर भी है ना तो आप सीख सकते हैं। बस ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए, स्किप मत करिए। हर एक पॉइंट को, कहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, कहाँ पे डार्क हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम आउटलाइन बनाएंगे, देन हम बेस का डार्क पार्ट करेंगे, देन मिडिल पार्ट करेंगे, देन अपर पार्ट वाला रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को, और मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को हमेशा एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको पता ही होगा क्यों करती हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि अगर हम किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो अगर आप मेरे साथ भी बना रहे हैं तो वो आप साथ साथ में बना सकते हैं, राइट। अगर मैं बोलती रहूँगी तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपने पहले ही सुन लिया, उसके बाद मेरे साथ बना रहे हैं तो ईजी होगा, मेरी ये थिंकिंग है। तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया। और स्केचिंग सीरीज़ ऐसी है ना कि मैं रियलिस्टिक चीज़ें अभी फॉलो करवा रही हूँ। देन आफ्टर डैट मैं चीज़ों को वाटर कलर, एक्रेलिक कलर्स सब कवर करूँगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो छोड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ स्केचिंग ऐसा है कि बेसिक टूल्स में हम बना सकते हैं। तो स्केचिंग सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है फिलहाल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी सीरीज़ साइड बाय साइड स्टार्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और अच्छे से चीज़ों को रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करेंगे, 3D बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ख़राब लगता है या कहीं पे पॉइंट पे आपको लगता है कि ये नहीं, ये करना चाहिए था, तो प्लीज़ कमेंट करिए। बिकॉज आप लोगों का अप्रिशिएशन उतना ही ज़रूरी है, बट उतना ही मुझे और भी ज़रूरी है कि कोई मुझे वो बताए कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे कुछ हमको सही नहीं लगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा तो नाइस लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं नया रियलिस्टिक टॉपिक, और हम क्लास बनाएंगे। चलिए। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. In the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling
Nature hums her song, no quest. A lullaby to draw in rest, where weary wanderers do invest. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space. In the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. The stars align, they softly hum, telling secrets of where we're from. In the quiet, our hearts succumb to a rhythm eternal as the drum. Glimmers dance on the ocean's crest. Nature hums her song, no quest. A lullaby to draw